So in my previous lecture, we have discussed some theorems and corollaries based on GCD, that is greatest common divisor. Now based on this, we will discuss a topic named as Euclidean algorithm. This is also associated with GCD. So let us see what it concludes. So the Euclidean algorithm may be desired as follows. For this, suppose a and b be two integers whose greatest common divisor is desired. इट मीन्स क्या कि कोई भी दो इंटीजर हमने लिया और उसका हमें जीसीडी कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मली क्या प्रोसेस है कि हम सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स को फाइंड करें और फिर उसमें देखें कि कौन सा कॉमन ग्रेटेस्ट पॉजिटिव डिवाइजर है. तो ये अगर कोई नंबर हमारा छोटा है, जैसे कि अगर हमने कैलकुलेट किया जीसीडी ऑफ 90 एंड 76, जीसीडी ऑफ 46 एंड 72, तो यहाँ तो ईजी है कि हम पॉजिटिव डिवाइजर्स ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे. बट अगर हमें जीसीडी ऑफ कैलकुलेट करना है 13,574 एंड 19,874, if we want to calculate the GCD of 1,57,822 and 14,05,762, then this task is very tedious. मीन्स उस केसेस में हमें पॉजिटिव डिवाइजर्स कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाएगा. तो इसके लिए जो टूल्स है वो यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं कि वहाँ से हम बहुत ईजिली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखते हैं क्या है इसका. सो if we find GCD of modulus of A and B, that is GCD of A and B, assuming that A should be greater equals to B and B greater than 0. So we know that by division algorithm, A can be written as A equals to Q1 into B plus R1, where 0 less than equals to R1 less than B. ये हमने डिवीजन एल्गोरिदम में पढ़ा था. If R1 equals to 0, then B divides A. It means अगर रिमाइंडर 0 है तो B A को डिवाइड करेगा. एंड GCD ऑफ A एंड B इक्वल्स टू B, और GCD भी A और B का पॉजिटिव डिवाइजर्स जो होगा वो हमारा B होगा. बट प्रॉब्लम इज दैट व्हेन R1 नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स यदि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये प्रोसेस को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. मीन्स इफ R1 नॉट इक्वल्स टू 0, डिवाइड B बाई R1. अब यहाँ हम क्या करेंगे, B को R1 से डिवाइड कर देंगे. जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर से हम B को डिवाइड कर देंगे. देन we will get some integers q2 and r2 satisfying b equals to q2 into r1 plus r2. इसके नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन बनेगा, जो अगर हम रिमाइंडर से b को डिवाइड करते हैं, देन वी गेट b इक्वल्स टू q2 into r1 plus r2, एंड अगेन कंडीशन विल बी फॉलो 0 लेस देन इक्वल्स टू r2 लेस देन r1. इफ r2 इक्वल्स टू 0, देन आवर वर्क इज फिनिश्ड. मीन्स रिमाइंडर अगर 0 है तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट है. Then we stop, otherwise we will proceed again like this, that is obtain R1 equals to Q3 into R2 plus R3, where 0 less than equals to R3 less than R2. मीन्स सेम कंडीशन को हम प्रोसेस करेंगे. द डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल सम 0, मीन्स जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. So at n plus 1th stage, where Rn minus 1 is divided by Rn, here one point should be noted that a zero remainder occurs sooner or later because the decreasing sequence b greater than R1 greater than R2 greater than and so on greater equals to 0 cannot contain more than b integers. b integers से ज़्यादा वो contain नहीं करेगा. It means the result is the following system of equations, that is a equals to q1b plus r1, condition is same, 0 less than equals less than r1 less than b. Next one, b equals to q2 r1 plus r2, condition will be 0 less than r2 less than r1. Same as it is, we will repeat r1 equals to q3 r2 plus r3 and 0 less than r3 less than r2. We will continue this process until we get the remainder 0. So finally we will get Rn minus 1 equals to Qn plus 1 Rn plus 0, means here remainder will be 0. So the last non-zero remainder that appears in this manner is equal to GCD of A and B. Now we will see some example based on Euclidean algorithm, that is how Euclidean algorithm works on some questions. कैसे हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैसे हेल्पफुल है जीसीडी किसी भी दो
बड़े नंबर का फाइंड करने के लिए, क्योंकि छोटा कोई नंबर हो उसका हम जीसीडी इजिली फाइंड कर सकते हैं बाय सर्चिंग अ पॉजिटिव डिवाइजर्स. So let us see how the Euclidean algorithm works in a concrete case by calculating GCD of 12,378 and 3054. मीन्स हमें GCD निकालना है 12,378 और 3054 का. So we will calculate. The appropriate application of the division algorithm produce the equation like this. It means 12,378 can be written as 4 into 3054 plus 162. It means here A equals to 12,378 and B equals to 3054. So 4 into 3054 plus 162, that is 162 is a remainder. Now 3054 can be written as 18 into 162. 162 is a remainder of first step plus 138. Here 138 is remainder, means remainder not equals to 0. So we will go further. Now again 162 equals to 1 into 138 plus 24, and 138 equals to 5 into 24 plus 18. Again remainder is not 0 because here remainder is 18. Now 24 equals to 1 into 18 plus 6, and 18 equals to 3 into 6 plus 0. It means now we will get finally the remainder 0. So our work is complete. So the last non-zero remainder appearing in those equations, namely the integer 6, is the greatest common divisor of 12,378 and 3054. So we have seen that how Euclidean algorithm is very important tool in finding a GCD of any two big integers. So students, on the basis of Euclidean algorithm, we will prove some theorems which will be helpful in solving some various problems. So next theorem is, if k greater than 0, then GCD of k into a comma k into b is equivalent to k into GCD of a and b. It means क्या, कोई दो नंबर हमने लिया a और b और उसमें किसी सेम इंटीजर से हमने a और b में मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद जो हम उसका GCD फाइंड करते हैं वो GCD जस्ट a और b का जो GCD होता है उसको आप k से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इक्विवेलेंट आता है. इट मीन्स क्या कि किसी भी दो इंटीजर्स में कोई तीसरे इंटीजर कॉमन इंटीजर से हम a और b दोनों में मल्टीप्लाई करें एंड दैट कॉमन इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन 0, then the resultant will be k times of GCD of a and b. So let us see the proof of this theorem. If each of the equations appearing in the Euclidean algorithm for a and b is multiplied by k, then we will obtain a into k equals to q1 into b into k plus r1 into k, where 0 less than r1k less than bk. It comes from the Euclidean algorithm, where r1k is a remainder. Now b into k is equivalent to q2 into r1k plus r2k, and again condition will be implied 0 less than r2k less than r1k, and again here r2k will be the remainder in this case. Now continuing this process, and we get r of n minus 2 into k equals to qn into rn minus 1 into k plus rnk, and condition will be 0 less than rnk less than r of n minus 1 into k. So repeating in the same manner, lastly we get r of n minus 1 into k equals to q of n plus 1 rnk plus 0. Now here we see that here remainder is 0. It means our work is finished. So we know that by Euclidean algorithm the greatest common divisor is the last non-zero remainder, that is rnk. जो हमारा सेकेंड लास्ट इक्वेशन है उसमें हमें रिमाइंडर rnk मिल रहा है. इट मीन्स अवर non-zero remainder is rnk, that is GCD of ka comma kb is equivalent to rn into k, that is k into GCD of a and b. It means GCD of a and b is rn. So we have easily proved that GCD of ka comma kb is equivalent to k into GCD of a and b, which will prove our theorem. On the basis of these theorems, there is also some corollary. So let us see. For any choice of positive integers a and b,
LCM of A and B is equal to A into B if and only if GCD of A and B equals to 1. ये वेरियस हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी देखा है कि जब हम किसी दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो अगर दोनों नंबर में कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं हो तो उसका जो एलसीएम कैलकुलेशन होता है वो दोनों का मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही यहाँ पे है क्या कि ए और बी का अगर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है तो ए इंटू बी होगा। कब होगा? व्हेन द जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1। ओके, सो लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस corollary। नो नीड टू प्रूव दिस corollary। हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। LCM of 19 and 20, LCM of 19 and 20 when you will find, then you will get the value 380, that is LCM of 19 and 20. And here we also see that 19 and 20 there is no common divisor of 19 and 20. इट मीन्स क्या, कोई ऐसा डिवाइजर नहीं है जो 19 को भी डिवाइड करे और एज वेल एज 20 को भी डिवाइड करे। सिंस GCD of 19 and 20 equals to 1, therefore the LCM of 19 and 28 is obtained by the multiplication of 19 and 28. So now we have read Euclidean algorithm and also based some theorems and corollary. So now we are in a position to solve some questions. So students, these are some assignments which you have to do. First question is find GCD of 143 and 227, GCD of 306 and 657, and GCD of 272 and 1479. Second question is use the Euclidean algorithm to obtain integers x and y satisfying the following conditions. First one, GCD of 56 and 72 equals to 56x plus 72y. Second one, GCD of 24 and 138 is equivalent to 24x plus 138y. GCD of 119 and 272 equals to 119x plus 272y. And last one, GCD of 1769 and 2378 equals to 1769x plus 2378 into y. In these four questions, you have to find the value of x and y. It means this condition comes from the linear combination of these one. In our previous lectures, we have studied that GCD of A and B can also be expressed as A into x plus B into y. So here mainly we have to find the value of x and y because A and B is already given, that is A is 56 and B is 72 in your first question. So I will expect that you can easily do these questions.